This is the first class of function. What we will read in this chapter: basic concepts about set, interval, and some basic inequalities. That is very important. That is very important. Most important part: sign scheme. Then we will have functions, idea about their domain, codomain, and range, absolute value or modulus function, greatest integer and fractional part, logarithmic and exponential function, graph of functions and their transformation of graph, actually type of function, one function, many one function, into and onto function, and how to find whether the function is one or onto. Then we will come to the topic composition of function and inverse of functions, even and odd function, periodic function. And this class will be spread over almost a series of videos. So now come to the topic. फंक्शंस के लिए सबसे ज्यादा जो सेट हम लोग को काम में आता है, दैट इज द सेट ऑफ रियल नंबर. We are quickly revisiting it. Actually, you know all of these and you are studying these from your childhood. Actually, we start with the set n. We start with the set n. n n is natural numbers, set of natural numbers, and no need to say it starts from 1, 1 2 3 4 and so on. The next superset is Z. Sorry, the next superset is W. W start from 0 1 2 3 and so on. And the next superset is Z. Z contains all the element -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 and so on to infinity. It starts from minus infinity. We haven't write minus infinity. Okay, this is the set of Z, set of integers. This Z has three parts. One is set of natural, another is set of natural, sometimes said to be Z plus positive integers. Another is Z minus, set of negative integers, and the 0. This is Z. Okay. Now the next superset is Q. The numbers which can be written in the form of P by Q, those are known as the rational number, and collection of all the rational number is denoted by Q. Q is the set of rational number. Rational number. And the numbers which cannot be written in the form of P by Q are known as irrational number. Irrational number. And Q and Q dash, Q and Q complement makes the R. So set of real numbers are the collection of rational and irrational numbers. So you have a chain of subsets. N is a subset of Z, is a subset of
Q is a subset of R. This is the chain of subset. So R is the greatest one. Sometimes we take it as the universal set when the necessary uh, when it is necessary, then we take it as the universal set. Okay, the next topic is interval on real set. Actually this is very important. कोई भी फंक्शन का जब हम डोमेन निकालते हैं या कोई भी इनइक्वालिटी जब हम सॉल्व करते हैं तो ये चीज का हमको बार बार जरूरत पड़ेगा। तो हम लोग सबसे पहले डिफाइन करते हैं, दिस इज नोन एज द ओपन इंटरवल a to b. A to b contains all those x such that x is greater than a less than b. This is the set. A and b are not included. I have taken the blank circle to denote a and b. That means they are not taken. The second one, a and b are taken as solid dots. A and b will be taken. That means x assumes the value of all the real numbers between a and b are included. This is a to b x such that a x b. This is said to be closed open, or sometimes it is said to be semi closed. The next one is a b. A is excluded and b is taken, b is included. So these intervals are basically continuous subset of real numbers. These are the finite intervals. Now come to infinite intervals. No need to explain now. Now I have to write only a to infinity. इन्फिनिटी किसी ने देखा नहीं तो इन्फिनिटी हम टच कर नहीं सकते। इन्फिनिटी आर ऑलवेज एक्सक्लूडेड। दिस इज द सेट x such that a x infinity. This is the set minus infinity to b. B is again excluded. X such that minus infinity x b. Once again माइनस इंफिनिटी किसी ने देखा नहीं तो माइनस इंफिनिटी एक्सक्लूड होगा। द थर्ड वन इज a to infinity x such that x a is included and infinity as usual excluded, and the last one is minus infinity to b. B is included. X such that minus infinity x b. We will require all these things in the next topic, sign scheme. When we will discussing the sign scheme, you will get more vivid picture. Okay, these are some basic inequalities you will require in this topic. In the subsequent topics, a is less than b, b is less than c, that implies a is less than c. We know that
less than is transitive. This is transitive. So no need to explain this thing. The second one also, it doesn't need any explanation. A is less than B. So if you are adding the same thing both the side, the inequality will not change. A is less than B, C is less than D, then A plus C is less than B plus D. But the second part is not very trivial. The first part is trivial. You can add both inequalities to get a new inequalities, but you cannot subtract, you cannot write all the way A minus C is less than B minus D. If A is less than B, C is less than D, you cannot write always. Let us take an example to clarify the concept. 5 is less than 8, 3 is less than 7. So can you subtract the inequalities? It will be 2, whereas it will be 1. Is it true? No. So this doesn't hold all the time. You cannot subtract inequalities. But this is the this will be valid always. Why? I will just explain this next one. A is less than B. So if you are multiplying a positive quantity, take any example, 3 is less than 5. You If you are multiplying 2 both the side, the inequality will not change. But if you multiply minus 2 with 3, then minus 2 into 5, perhaps the inequality will change. Not perhaps, it is must. So these are two. If you are multiplying with a positive quantity, inequality will not change. If you multiply with a negative quantity, the inequality will be reversed. Okay, now come to this. A is less than B and C is less than D. Multiplying minus 1 with the second inequality, we will get this thing. Okay. Now we can now add because of this first property. So A minus D is less than B minus C. This is one tricky property. Sometimes student write this thing, but this is wrong. Sometimes student write it, but it is wrong. Okay, no problem. We will not make mistake because हमको तो पता है. Now A is less than B, 1 by A greater than 1 by B if A and B are of same sign, and this one is again tricky. Always the जब हम reciprocal लेते हैं ये क्या होता है, इनइक्वालिटी रिवर्स करता है, लेकिन ये हमेशा नहीं होता है. जैसे मान लेते हैं हम -5 इज लेस देन 2, -1/5 1/2, ये फिर भी यही रहेगा. क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव है, हमेशा नेगेटिव है, ये हमेशा पॉजिटिव है. तो रेसिप्रोकल लेने से हमेशा नहीं होता है. ये रिवर्स कब होता है? इनइक्वालिटी रिवर्स होता है जब दोनों सेम साइन का होगा, जब दोनों पॉजिटिव होगा, दोनों नेगेटिव होगा. जब एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा, तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा. And now comes these two important inequality. These are actually one of the most favorite of mine. A plus 1 by A greater than equal to, and A plus 1 by A is less than equal minus 2. This holds when A is
greater than 0. This holds when a is less than 0. The inequality is attained at a equal 1, and here the equality is attained at minus 1. This equality will be attained in a equal 1, and this equality will be attained at a equal minus 1. ये एक्चुअली AMGM इनइक्वालिटी का एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन है. हम उस डिटेल्स पे नहीं जा रहे, लेकिन हम ये थोड़ा सा एक लिखना चाहते हैं. tan x plus cot x is greater than equal to when x lies in the first quadrant or थर्ड क्वाड्रेंट, बिकॉज ये दोनों क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है. You can write similarly sin x plus cosec x is greater than equal to in the first and second quadrant, obviously with the restrictions where they are defined. Okay. If anyone asks you when this thing is going to be positive, this is an expression x minus 2 into x minus 5 into x minus 3 is positive. At first we draw a real line. We draw a real line. X is equal to 2. At x is equal to 2, this whole expression will be 0. These are said to be the zeros of the polynomial. So there are 3 zeros. For any real number lying here, let it be x. So any real number greater than 5, x minus 5 will be positive. This is positive. X minus 3 is positive because x is greater than 5, trivially it will be greater than 3 also. ये वैसा ही ये 2 से भी बड़ा होगा. तो if you calculate the value of this expression, let this be px, then at this point this will be product of all the positive numbers. So it will, the sign of px will be positive here. Now coming to this interval, ये interval में 3 to 5 में x minus 5, x 5 से छोटा है, it will be negative, but x 3 से बड़ा है और x2 से भी बड़ा है. So now here it will be minus, plus into minus into plus, so that will be negative. When x comes in this interval, x minus 3 is negative, x minus 5 is negative, so negative into negative, it will be positive, and x is greater than 2, so it will be positive once again. Now when x is less than 2, it will be minus. So we can find the sign of any polynomial according to this rule. We can generalize it. अब ये अगर px आपका एक एक्सप्रेशन है, if px is an expression, यहाँ हम लोग ये मान लेते हैं x1 is less than x2 is less than x3 and so on. सबसे पहले ये x1 x2 x3 ये आपका zeros of the polynomial होगा. Let it be x1, let it be x2, let it be x3 and so on to
xn, xn minus 1 and xn. हम जो यहां सीखे वहां से हम इसको जनरलाइज कर रहे हैं. आपका ये जो है, दिस इज द राइट मोस्ट इंटरवल. This is the right most interval, that will be positive. Again this will be negative. Alternative positive negative sign are there. Here also you will have some alternative positive negative sign. Xn minus 2, I have left it. Okay, so you can generalize this concept. This is said to be the sign scheme or method of intervals. Okay, now we should formulate. Now if you have, just think, if you have a minus sign, leading minus sign here, so this is positive, but when this minus sign will be multiplied with the sign of this polynomial, you will have a minus sign here also. So we will have the generalized version. So this is the generalized thing of this one. For polynomial consisting of only non-repeated linear factors, very important, it should be non-repeated linear factors. It should not repeat. Here no one is repeated, no factor is repeated. Okay, all the x are positive in each and every bracket. X should not be negative. ये जो कैलकुलस है ये वेरिएबल्स का डोमेन है, वेरिएबल्स का जगह है, तो वेरिएबल्स से होगा. वेरिएबल्स कभी भी नेगेटिव नहीं होगा. वेरिएबल शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव. नाउ we are using this concept to solve this problem. 2x cube minus 5x square, 5x square plus 2x when it is greater than equal 0. Okay, now take x common, it will be 2x square minus 5x plus 2 greater than equal 0. So it will be x, 2x square minus 4x minus x plus 2 is greater than equal 0. X 2x minus 1 into x minus 2 should be greater than equal 0. What are the zeros of this polynomial? This is not x, this is actually x minus 0, x minus 2, 2x minus 1. So this is the real line, minus infinity to plus infinity. What are the zeros? X equal half, x is equal to 0, x is equal to 2, this is 0, this is half, and this is 2. Okay, rightmost interval is always positive. Rightmost interval will be positive. Subsequent intervals will have alternate sign from the right side. From the right side. Okay, so when it will be greater than equal 0, it should be 0 to half, 0 to half, and 2 to infinity. This interval 0 to infinity and 0 to half.
इन्फिनिटी हैज टू बी लेफ्ट आउट, इन्फिनिटी नहीं लेना है। अच्छा, ये 2 पर ये जो पॉलिनोमियल है ये आपका 0 हो जाएगा, एंड वी नीड ए 0 greater than equal 0, so 2 should be included. Similarly, half should be included, 0 should be included, and our solution is union of these two intervals. Perhaps you get it. अब हम ये केस लेते हैं, इसमें क्या होगा, x minus 5 to the power 3, x minus 4 to the power 4, x plus 1 cube, and x to the power 6 when it is greater than 0. इस पॉलिनोमियल में, इस इनइक्वालिटी में जो फैक्टर्स है ये रिपीटेड है। x माइनस 4 4 टाइम्स रिपीटेड है, x प्लस 1 3 टाइम्स रिपीटेड है, x माइनस 5 3 टाइम्स रिपीटेड है, x व्हाट इज x, दिस इज एक्चुअली x माइनस 0, ये 6 टाइम्स रिपीट है। पिछला केस जो हम लोग का था वो नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स था, इसमें लीनियर रिपीटेड फैक्टर्स है। ये आपका रूल है। सबसे पहले x हर किसी में पॉजिटिव रहेगा, हर फैक्टर में पॉजिटिव है। पुट ऑल द जीरोस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फैक्टर अगर इवन टाइम्स रिपीट होगा तो सेम साइन होगा, सेम साइन इफ द फैक्टर इज रिपीटेड इवन नंबर ऑफ टाइम्स, अदरवाइज ऑपोजिट साइन in the subsequent intervals. Now, in the light of this, let us try to solve it very quickly. Okay, let us draw the real line. This is your real line. Okay, now let this be minus infinity, let this be plus infinity. What are the zeros? The zeros are x is equal to 5, x equal 4, x is equal to minus 1, and x, this is not actually x, I have told you this is x minus 0, and x is equal to 0. So putting the zeros, minus 1 0 4 and 5, rightmost interval will be positive. 5, x minus 5 is repeated thrice, so odd number of times. एक बात याद रखो, जो ऑड टाइम्स रिपीट होगा उसका दोनों तरफ क्या होगा, ऑपोजिट साइन होगा। यहां पर मैंने ऑपोजिट साइन लिया। 4 इज रिपीटेड 4 टाइम्स इवन टाइम्स, सो यहां पर सेम साइन होगा। 0 इज रिपीटेड 6 टाइम्स, यहां पर भी नेगेटिव होगा। एंड माइनस 1 ऑड टाइम्स, सो यहां पर पॉजिटिव होगा। ना पॉजिटिव कब कब होगा, नॉट इक्वल टू 0 है, सो इसका सोल्यूशन होगा माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1 एंड 5 टू इंफिनिटी। अब एक बात बताओ, माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी तो लेना नहीं है, माइनस 1 और 5 लेना है क्या? माइनस 1 में ये पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा, सो माइनस 1 इज नॉट टू बी इंक्लूडेड एंड 5 भी इंक्लूड नहीं होगा। This is the solution technique. Let us very quickly solve one more. 2 minus x to the power 3, 5 minus x to the power 4, and x minus
3 to the power 5 when it is less than 0. हमने क्या बोला कि x माइनस 2 होना चाहिए. दिस इज 2 माइनस एक्स. सो माइनस यहां से कॉमन लेते हैं. -1 कॉमन लेने से ये हो जाएगा x माइनस 2 एंड -1 to the power 3 it will be -1, so it will be x minus 2 cube. दिस इज x माइनस 5. यहाँ से भी कॉमन लेते हैं माइनस, लेकिन -1 to the power 4 it will be plus, and then x minus 3 to the power 5 less than 0 when it is to be less than 0. सबसे पहले हम क्या करते हैं, रियल लाइन ड्रॉ करते हैं. दिस इज योर रियल लाइन. ओके, this is your minus infinity, plus infinity. क्या क्या है, 2, 3 and 5. 2, 3 and 5. लीडिंग साइन क्या है, माइनस, तो इधर माइनस होगा. यहाँ पर हम लोग कहीं लिखे थे ना कि पुट द सेम साइन एज द ऑफ लीडिंग साइन ऑफ द पॉलिनोमियल इन द राइट मोस्ट इंटरवल, तो यहाँ माइनस हो गया. अब 5 कितना बार रिपीट है, 4 टाइम्स रिपीट है, तो इसका दोनों तरफ सेम साइन होना चाहिए. 3 कितना बार रिपीट है, 5 टाइम्स, ऑड टाइम्स, सो यहाँ पर ऑपोजिट साइन होना चाहिए. एंड 2 इज रिपीटेड 3 टाइम्स, सो यहाँ पर फिर ऑपोजिट साइन होना चाहिए. व्हाट आई नीड लेस देन 0. लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव, so the solution will be minus infinity to 2, 3 to 5 and 5 to infinity. That is the solution. Perhaps you understood. इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अब रैशनल फंक्शन को देखते हैं. रैशनल फंक्शन के लिए भी रूल आपका एग्जैक्टली सेम है. अंतर कहाँ है, खाली डिनोमिनेटर में. हम लोग क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले हम लोग जीरोस फाइंड कर लेते हैं. सबसे पहले रियल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. दिस इज योर रियल लाइन. अब इसमें हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का जीरोस लिख लेते हैं. न्यूमरेटर का है 1, -2, 3 एंड -6, और डिनोमिनेटर का जीरोस है 0 एंड 7. ये जो डिनोमिनेटर का जीरोस होता है, इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी. ये कभी भी नहीं लेना है, ये हमेशा एक्सक्लूड होगा. इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी का जो पॉइंट है, ये हमेशा से एक्सक्लूड करना है. तो हम लोग सबसे पहले ले लेते हैं -6. दिस इज योर -6, दिस इज योर -2, दिस इज 0, 1, 3 and 7, and this is your infinity minus infinity. Okay, पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी को क्या क्या है, 7 एंड 0. ये पॉइंट कभी भी इंक्लूड नहीं होगा, इसलिए पहले ही हम लोग मार्क करके रख लिए. अब दिस विल हैव पॉजिटिव साइन बिकॉज द लीडिंग साइन इज पॉजिटिव. 7 कितना बार रिपीट हुआ है, ऑड टाइम्स, नेगेटिव. 3 कितना बार रिपीट हुआ है, ऑड टाइम्स, पॉजिटिव.
1 कितना बार रिपीट हुआ है? ऑड टाइम्स, नेगेटिव। 0 कितना बार रिपीट हुआ है? 3 टाइम्स, ऑड टाइम्स, सो इट विल बी प्लस। -2 कितना बार रिपीट हुआ है? इवन नंबर ऑफ टाइम्स, सो इसका दोनों तरफ पॉजिटिव साइन होगा। एंड -6 is repeated 1 times, so this will be negative. Now what will be the solution? ये आपका solution है. This is your solution. I am marking. This is your solution. I am marking once again. This is your solution, and this is your solution. So the solution is -6 to 0, because 2 has to be included. You have to do not, आपको ये बाइफरकेट नहीं करना है. तो -6 to 0, 0 को इंक्लूड नहीं करना है तो 0 को पहले से ही लगा लिए. और कहाँ? 1 से 3, 1 से 3 एंड 7 टू इंफिनिटी. 7 को भी इंक्लूड नहीं करना है, इसको इंक्लूड करना है, इसको भी इंक्लूड करना है, and this is your solution. So we have done for the rational function also. Now how you have learned the concept, इसके लिए हम लोग 2 प्रॉब्लम यहां पर लिख चुके हैं. आप यहां पर ये वीडियो पॉज करके अपने से कोशिश करो एंड उसके बाद देखो मेरा साथ आपका सॉल्यूशन मैच कर रहा है कि नहीं. अच्छा, यहां पर एक बात बोल लेना बहुत जरूरी है. कोई भी इनइक्वालिटी दूसरा 1 या -3 से बड़ा या छोटा नहीं होता है. हम लोग के पास 2 ही टाइप का इनइक्वालिटी होता है. आइदर px इज ग्रेटर देन इक्वल 0 और px इज ग्रेटर देन 0, और px is less than 0 or less, px is less than 0. तो यहाँ 1 नहीं चलेगा. ये राइट हैंड साइड में जो 1 है यह हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1. x -3 into x plus 2 divided by x square plus -1 is less than 0. ये 1 को हम ट्रांसपोज किए, ये इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए. नाउ क्विकली इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व कर ले रहे. एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2x -6 divided by x square -1 is less than 0. That will imply x square -x minus 6. This will be x square -1. That will be minus x square -1 less than 0. X square would be cancelled out. X square will be cancelled out. So it will be -x -5 divided by x -1 into x plus 1 less than 0. X plus 5 divided by x minus 1 into x plus 1 less than 0. So here is your number line. What are the zeros? The zeros are -5, 1, -1 and plus 1. That is your infinity. That is your minus infinity.
and the leading sign is minus, so here it will be minus sign. Now alternative positive negative sign, because no one is repeated even number of times. Okay, so your solution is, आपका solution के साथ मेरा solution मैच किया, minus infinity, so the solution is -5. So the solution is -5 to -1 union 1 to infinity. This is the solution. आपका solution मेरा solution के साथ मैच करना चाहिए. Now the second question. What is my second question? The second question is almost similar. Question number 2. आप ट्रांसपोज करेंगे, आपको क्या मिलेगा? x square minus 2x plus 3 divided by x square minus 4x plus 3 plus 3 greater than equal 0. इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल 0. ओके, ये क्या हो जाएगा? 3x square, it will be 4x square minus 12x minus 2x, it will be minus 14x plus 9 plus 12 divided by x square minus 4x plus 3. फैक्टराइजेशन करेंगे. आप इसको फैक्टराइजेशन करके देख लेना, ये कुछ ऐसा आएगा x माइनस 2 इंटू 4x माइनस 6 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 इंटू x माइनस 1. x minus 3 into x minus 1 greater than equal 0. So ये आपका रियल लाइन, ये हो गया माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी. व्हाट आर द zeros? Zeros are x equal to x is equal to 6 by 4, that means 3 by 2 न्यूमरेटर का है और डिनोमिनेटर का है x equal 1 and x is equal to 3. x is equal to 1, x is equal to 2, x is equal to 3 and x is equal to 3 by 2. Point of discontinuity क्या है? 1 and 3, 1 3. यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव. So these are the sign when it is greater than equal 0. यहाँ पहले मार्क कर लेते हैं, यहाँ अब आंसर लिख लेते हैं. माइनस इंफिनिटी टू 1, 3 by 2 to 2 and 3 to infinity
infinity and minus infinity are to be excluded. Now what are the point of discontinuity? 1 and here 3. Now all the points are to be included. Perhaps you have understood all the topic. So we will learn more topic in the subsequent videos, और ये चैनल सब्सक्राइब करेंगे सच दैट नया वीडियो जब भी आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।